So be careful my dear brothers, especially my dear children. ईमान बचाना बहुत मुश्किल है. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has already informed us a time will come that a believer will be a believer during the day, and during the evening he will turn a disbeliever. During the evening he will be a believer, next day morning he will turn a disbeliever. आज ऐसा मौका है ना, कितने लोग हमारे सामने कल तक सही अकीदे में थे और आज वो लोग वहाबी अकायद को ऑप्ट करके दूसरों को मुशरिक कहते. होता है कि नहीं? आपने सुना है कि ये कहा हो कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, मौलूद पढ़ना शिर्क है, ये लोग कहते हैं ना. आपको एक आसान सा जवाब मैं सिखा देता हूँ. इफ दे एवर से दैट कॉलिंग या रसूल अल्लाह इज शिर्क और रिसाइटिंग मौलूद इज शिर्क, you ask them, did your parents recite this? They will say yes. What about your grandparents? Yes, they also recited. What about your great grandparents? They recited. Did they say ya Rasulullah? Yes, they did say. Did they recite qasida? Yes, they did. तो अगर वो सब मुशरिक थे तो that mean मुशरिक का मतलब काफिर हो गया. And if a person has turned kafir, nikah is valid or invalid? Invalid. So you say your grandfather committed shirk, that means your grandfather and grandmother's nikah is invalid. If that is invalid, the contact is haram or halal? It's zina. And through a zina, if your father was born, you are regarding your father as an illegitimate child. तुम अपने दादा को मुशरिक कह के अपने बाप को हलाली नहीं मानते ना. और तुम्हारे बाप ने भी अगर मीलाद मनाया है, या रसूल अल्लाह कहा है, वो मुशरिक है, तो तुम्हारे माँ बाप का निकाह भी टूट गया. तो निकाह टूट गया तो कांटेक्ट हराम का हुआ, तो तुम अपने आप को भी हलाली नहीं मानते. तो इन लोगों की बेवकूफ़ी इतनी है कि ये सोचते नहीं क्या कह रहे हैं. ये अपने बाप दादा परदादा सबको मुशरिक कह के ओनली दे आर द बिलीवर्स. Whereas this belief, what we speak, alhamdulillah, is the belief of all the mufassirun and muhaddithun. अगर इसमें से कोई भी एक बात गलत हो, I challenge to prove it and take whatever you want from me. And if you cannot prove me wrong, because I am referring to the tafsir, if you cannot prove wrong, then we have a polite request. Don't utter shirk and bidah for each and everything. Come, do repent, come to the fold of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. A very polite invitation, because we know many people, they have joined the Wahhabism, Salafism, Deobandism being unaware of their reality. So we politely invite you, अगर आपने अनजाने में उनका साथ दे दिया है, come and learn the true Aqidah from the scholars of Ahlus Sunnah. Try to understand the reality. And if you have ever uttered intentionally or unintentionally that calling Ya Rasulullah is shirk, do repent now.